So today we will continue the question of t-test as a test of difference of mean. Now we have given the two populations have the same mean, but the standard deviation of one is twice of the other. So दो populations का mean क्या है same है. Let mu be the common mean and sigma and 2 sigma be the standard deviation of two population. क्योंकि अगर एक sigma लिया है तो दूसरा उसका twice है. प्रूव करना है in a sample of size 4500 यानी n1 and n2 both are 4500 is drawn under simple sampling condition. The difference of mean यानी x1 minus x2 mod will in all probability not exceed 0.1 sigma. हमें प्रूव करना है कि जो x1 minus x2 mod की जो वैल्यू है राइट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 सिग्मा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यानी लेस देन हमें प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z कि z क्यों ही आपने स्टैटिस्टिक्स लगाना है वो x1 बार माइनस x2 बार है. ठीक है. पॉपुलेशन मीन आप लेके चलेंगे दोनों का सेम है तो यहाँ पे 0 आ गया. ठीक है. यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड यू हैव कैलकुलेटेड z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 ये आ गया. ठीक है. अब हमें पता है कि जो z की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम z लाइज बिटवीन -3 to 3. So that's why they have taken mod of z less than 3. अब आप इसी z को जो आपने भी कैलकुलेट किया उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. सो mod of z is less than 3 implies what you have got that is equal to x1 minus x2 bar is mod divided by sigma by 30. So mod of z is since mod of z is less than 3 it implies x1 minus x2 bar divided by sigma by 30 if mod is less than 3 implies x1 minus x2 bar mod is less than 3 into sigma by 30. It is x1 bar minus x2 bar is less than sigma by implies x1 bar minus x2 bar is less than 0.16. So this is the first part of the theorem that we want to do. Now secondly what we want to find out also find the probability that the difference exceeds half that. The difference exceeds half that. So now we want to find the probability that the difference exceeds half that amount. So what you want to calculate probability of mod of x1 minus x2 bar is greater than half of that amount. Half आपने लिख दिया और अमाउंट कौन सा था आपका 0.1 सिग्मा जो अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया है. ठीक है. So it comes out to be 0.05. Then you will put the value of again z की वैल्यू पुट करेंगे मतलब कैलकुलेशन करेंगे. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा yes. You will calculate probability of so you will put the value of x1 minus x2 bar here that is mod of z into sigma by 30 ये साइड पे लिखा हुआ है. ठीक है. ये वैल्यूज पे पुट कर देंगे. सो आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1.5. आपको कैलकुलेट करना है
probability mod of z greater than 1.5, right? So mod of z is greater than 5. It implies आपने इसको कन्वर्ट करना है ताकि आपको जो टेबल वैल्यू है वहां से जनरेट हो जाए. So this comes out to be, अब देखिए इसको कैसे लिखना है. दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 1.5. ग्रेटर देन है तो हमने कॉम्प्लीमेंट में से इसको लिख दिया. अब अगर इसको पिक्चराइज करें, इसका फिगर, इसका पिक्चर्स, इसके ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा. यस, इसके ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बना है ये. दिस इज z इज इक्वल टू 0. ठीक है. दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन, इसको इस तरह से लिखेंगे पहले, z is greater than 1.5 plus probability of z is less than. अब this is equal to, और आप इसको कॉम्प्लीमेंट में से लिख दीजिए 0 लेस देन mod of z. This is quite easy, right? So this is equal to 1 minus, so this is, अब देखो इन्होंने इसको 2 टाइम्स में एक्सप्रेस किया है. 2 टाइम्स क्यों आया? देखो कि mod of z लगा है. चाहे मैं वैल्यू नेगेटिव पार्ट में देख रही हूँ चाहे मैं पॉजिटिव पार्ट में देख रही हूँ, आंसर आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. अब दो तरह से एक्सप्रेस कर लिया है इसको. अब दिस इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 1, राइट. अब ये आपका 1.5 है. यहाँ पर सपोज करिए, सपोज आई हैव टेकन 1.5 हियर, यहाँ पर 1.5 ले लीजिए. z इज इक्वल टू 1, यानी आपका ये जो हमें जो एरिया है ये वाला है, ये सारा जो है एरिया अंडर कर्व है. और इसकी जो टेबल वैल्यू है वो हमें नॉर्मल टेबल से हम देखेंगे इसकी वैल्यू, एंड इट कम्स आउट टू बी, वैल्यू कितनी है टेबल वैल्यू? 0.4332. ठीक है. सो यू विल पुट द वैल्यू एंड देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 0.0136. So there are two ways to express this. Either you can, here you have take the complement, and then you will make it twice. चाहे मैं z को 1.5 से आगे देखूं या -1.5 से पीछे देखूं, अल्टीमेटली जो वैल्यू है सिमेट्री करके हमारे पास डबल 2 टाइम्स हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन. इसमें हमने चेक करना होता है कि क्या पॉपुलेशन का स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन है कि नहीं है. ठीक है जी. सेट अप द नल हाइपोथेसिस. द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा. It is not equal to sigma. It is greater than sigma. Then the statistic. यहाँ पे अब सैंपल स्टेटिस्टिक्स है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है. ठीक है. दिस इज s माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ऑफ it. तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक का काम कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्टैंडर्ड एरर लगेगा दैट इज सिग्मा बाय अंडर रूट ऑफ, ये नीचे उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ, दिस इज सिग्मा बाय अंडर रूट ऑफ 2n. तो कंक्लूजन विल रिमेन सेम. इफ z is greater than z alpha, null hypothesis rejected, otherwise it is accepted.
Same here, you can find out the 95 confidence interval, 99, 100%. Just you have to fit the value of here. अब हमें find out क्या कर रहे हैं हम S find out कर रहे हैं. हम यहाँ पे population का स्टैंडर्ड डेविएशन का एक कॉन्फिडेंस इंटरवल ढूंढ रहे हैं, यानी सिग्मा की वैल्यू ढूंढ रहे हैं. सो उसमें स्मॉलेस्ट यूज करेंगे और स्टैंडर्ड एरर यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू 95% it is 1.96, 99% it is 2.58, 100% we will fit here 3. So is it likely that a sample of 300 items with the standard deviation 5.4 is a random sample from a large population whose mean is 16.8 and standard deviation 5.2? Calculate 95% limits of the standard deviation. हमें बताना है कि क्या एक सैंपल जो है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है वो एक लार्ज पॉपुलेशन में से लिया गया जिसका मीन इतना और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है. तो हम सिग्मा क्या लिखेंगे? सिग्मा इज इक्वल टू 5.2. टू टेल है, ग्रेटर लेस के बारे में नहीं बात की है, राइट. सो अल्फा 5% पे हम चेक कर लेंगे, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगाएंगे, एस माइनस सिग्मा बाय sigma 1 over 2n. So you will calculate it. What was that is 0.9. It's quite less. Null hypothesis. आपका 5% पे वैल्यू कितनी बड़ी है? 1.96. The calculated value is less than the null hypothesis accepted. So population standard deviation is so 95 confidence interval. We will calculate by s plus minus 1.9. With the formula you can calculate. So therefore the value of sigma is lying between 4.9 to 5. याद देखो आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5.2 है. और देखो रेंज कितनी आ रही है? 4.9 to 5.8. इसका मतलब आपका जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है इस इंटरवल के बीच में. The test of significance of difference of standard deviation. So हमने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, दो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है कि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे. So we set up the null hypothesis that the population standard deviations are equal, not equal to, greater than equal to. टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या लगना है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स का काम कौन कर रहा है? S1 माइनस कौन कर रहा है? S1 माइनस. और सिग्मा 1 दोनों क्या है? सेम है, तो यहाँ 0 आएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ 1 माइनस. दिस इज S1, दिस इज S2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इनका जो फॉर्मूला है वो 2 and 1 है. They have calculated variance of S1 minus S2. This is variance of S1, variance of S2, और बाकी 0 हो जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट है आपस में. So, इसका फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर बाय 2 and 1, सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2. ठीक है, और जब आप इसका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर बाय 2 and 1. ठीक है जी. So the same decision at 5% at any level of significance for given tail of test सेम रहेगा. और यहाँ पे सेम कॉन्फिडेंस इंटरवल. स्टेटिस्टिक्स देखना है क्या है. जब सिंपल मीन था तो x बार था, जब डिफरेंस ऑफ मीन था तो x1 माइनस x2 बार, x1 बार x2 बार मॉड था. जब सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन था तो s1 था, दो का डिफरेंस है तो मॉड ऑफ s1. अकॉर्डिंग टू which tail of test you are taking, 1.96, 2.58. Whenever the population variances are not known, then we will use the sample variances. So we have given the mean yield of two sets of plots and their variability. अब यहाँ पर variability आ जाती है, इसमें आपको वहाँ standard deviation दिया हुआ है. ठीक है,
examine whether the difference in the variability is significant or not. Variability words the standard deviation नहीं बताया हुआ है. It means you have to set up the null hypothesis that sigma 1 is equal to sigma 2, or you can set the hypothesis that the difference in the variability is insignificant. Okay? आप h0 क्या लिख सकते हैं? Difference in the variability is insignificant. Alternative set कर लेंगे, that statistics लगाएंगे. You have all the values. We have not given sigma 1 and sigma 2, so we will use the sample standard deviation. Calculate the values. That is 1.3 and here is 1.96. Again आपकी value जो है वो, अगर हम इसको ग्राफ देखें नॉर्मल का, ये दिस इज अ क्रिटिकल रीजन. जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1 पॉइंट, वैल्यू आ रही है 1.3. 1.3 ये क्रिटिकल रीजन है. दिस इज द क्रिटिकल. हमारी वैल्यू पीछे रहेगी z की. ठीक है जी. therefore null hypothesis is accepted. यहाँ आप लिखेंगे that is the difference in the variability is insignificant. Right? So same here. Now in this example number 18 we have given the two questions. One, random samples from the two countries. Random samples drawn from the two countries give the following data: mean height in inches, standard deviations, number in samples. ठीक है. n1 n2 sigma s1 s2 1 bar x2 bar is given. तो क्वेश्चन है इसमें, is the difference between mean significant? Is the difference between standard deviation? So हम दो टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे. First you will apply the test of difference of means. You have all the values, right? Difference of means लगाएंगे. ठीक है. Z की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.56. It is again less than 1.96. So therefore null hypothesis accepted. So we conclude that there is no significant difference between them. Similarly, we will check the test of significance of the difference of standard deviation. So again, you will set up the null hypothesis two-tail test, put the value. Z is again less than 1.96. Therefore, null hypothesis is accepted. So now next test is the test of significance of single population. With the help of this test, we can test whether the proportion of success in the population is P on the basis of large sample. We set up the following hypothesis. So, what is the meaning of population proportion? Population proportion का क्या मतलब है यहाँ पे?
Z test for difference name है सिंपल एक Z test for Z test for सिंगल पॉपुलेशन, डिफरेंस नहीं करेंगे, पहले सिंगल की बात करेंगे। सिंगल सिंगल पॉपुलेशन। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? सपोज करो एक एट्रीब्यूट है आपके पास। एट्रीब्यूट का क्या मतलब है? क्लास है पूरी की पूरी, एक पूरी कंप्लीट क्लास है, उस क्लास में आज कितने बच्चों ने ब्लैक पहना हुआ है, ठीक है। इट मीन्स अगर 50 की क्लास है और 25 बच्चों ने उसमें से ब्लैक पहना है तो कितना हो गया सक्सेस का? 25, ठीक है। सो इसी तरह अब हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। उसके लिए जो आप नल हाइपोथेसिस क्या सेट करेंगे? नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल टू कैपिटल, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज नॉट इक्वल टू पी और ग्रेटर देन पी और लेस, ठीक है, जो एक प्रोसीजर कंप्लीट चलता है। उसके बाद जेड। अब यहाँ पे स्टेटिस्टिक का नाम क्या है? का नाम है स्मॉल p, यानी सैंपल प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब पूरा सपोज करो पूरा कॉलेज है, पूरा कॉलेज जो है वो एक कंप्लीट, हमने उसमें से एमएससी की जितनी क्लासेस हैं हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। अब उसमें से हमने एमएससी में से हमने एमएससी मैथ्स उठाया, ठीक है, और हमने एमएससी एमएससी मैथ्स उठाया और एमएससी हमने इकोनॉमिक्स उठाया, एम इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स। और उसमें से देखा कि कितने स्टूडेंट्स ने आज ब्लैक पहना हुआ है, ठीक है। तो हमने सैंपल लिया पहले, सैंपल मान लो हमें दोनों क्लास में से हमने सैंपल, it's more that it's a very large sample test, so we have to take the suppose we have taken a sample of 100, so अब इन 100 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने आज ब्लैक पहना है, हमने इसको ऑब्जर्व किया डाटा को, तो सपोज करो 75 बच्चों ने आज ब्लैक पहना है। इट मीन जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है वो आपका, यानी सैंपल का जो कितना है 75। So on the basis of this we can check whether the population proportion, यानी सारे एमएससी के जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, उनका उनका जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, यानी उनमें से कितने बच्चों ने ब्लैक पहना हुआ है। अगर हमें कोई डाटा दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग तो हम उसको इससे टेस्ट करके देखें, ठीक है। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला होता है इसका, राइट। सो ये फॉर्मूला आपके सामने है। सो p इज द सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस एंड q इज इक्वल 1 माइनस p। q क्या है उसका? कॉम्प्लीमेंट है। The decision will remain same, the calculated value of z is compared with the critical value। अगर हमारी वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो null hypothesis reject, otherwise it is। Now determination of confidence interval, same, how to find a confidence interval for population। तो आपका स्टैटिस्टिक्स है वही हर बारी लगेगा।
confidence interval or population proportion. क्या अगर 95% है तो आपका यानी P कैपिटल P बिलोंग्स टू P ठीक है जी। अगर 99% है कॉन्फिडेंस इंटरवल तो कैपिटल P। अगर we want to find 100% capital P belongs to plus minus 3 into standard। ये यहाँ पे फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ पी क्यू बाई एन। और अगर हमें पी और क्यू नहीं दिए थे तो हम एस्टिमेटेड पी और क्यू करेंगे। ये है एस्टिमेट और वो अप्रोक्सीमेटली होते हैं पी के, स्मॉल पी के और स्मॉल राइट। सो ये सारा so here they have given the remark, so I'm just coming to the questions now। so whenever देखो ये सारा बता दिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस क्या है। सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ। Coin is tossed 400 times and it turns up head 216 times। हमने 400 बारी कॉइन को फेंका और उसमें से कितनी बारी हेड आया 216 टाइम। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है स्मॉल p 216 डिवाइडेड बाय 400। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वेदर द कॉइन में बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड। चेक करो कि कॉइन अनबायस्ड है नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कॉइन इज टॉस्ड 400 times, it is given 216 times head, so sample probability of a head या हम कह सकते हैं सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। अब दो चीजें लिख सकते हैं कि हेड आना एक सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस कितना हो गया, सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड राइट। So to test whether the coin is unbiased, we set up the following hypothesis। Coin is unbiased यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इन जनरल एक बार फ्लिप करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और h1 क्या है, p is not equal to 1/2। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P। ठीक है, देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ p, it is under root of pq by n। Now whatever we have given, we will substitute the value here। We have given small p we have given 216 by 400 minus capital P is 1/2, which you have standard error of p, either you can write under root of npq or you can write under root pq by n। ठीक है, we put the value here, z comes out to be 1.6, so therefore the critical value of z at 5% level of significance है जी कितनी 1.96, therefore the calculated value is less than the critical value, hence the null hypothesis is accepted। Therefore we conclude that coin is